So, uh, in the last lecture, what we have discussed, what are the components which we have discussed in the last lecture? Last lectures, we started from the group action of piles. Group action of piles means how the piles, when the piles are in group, how they are going to work together. So what are the important parameters in the case of a group action of pile? I'm talking the words group action of piles. That means if a spacing is not adequate, if a spacing is not proper, in that case, overspacing will occur. And due to the overspacing, the shear failure may take place in between the two piles, and settlement may also take place. So group action of piles, the some points also we have discussed that whenever you want to install the piles below the wall footing, the piles should be installed in the staggered forms, in zigzag way we can say also. And in case of a column footing, if you want to install the piles, in that case, minimum 3 piles we have to install. Otherwise, there is a chance of eccentricity. Eccentricity means what? Load एक side में काम करना शुरू हो जाता है structure का. So in that case, the bending stress will occur and there will be damage. There will be there will be a break. We can say the break in between the pile cap and the pile. The connection will breaks, we can say. So next point, we have also talked that how we can determine the load carrying capacity of a group of piles. When the piles in groups, in suppose you are going to drive the piles in sandy soil, how we can calculate the load carrying capacity. That means QU, that is total load. What will be the total load when you are going to install the group of piles? What will be the total load? How much load it can take? So for that, we have also discussed the formula. So QUZ, we have denoted by QUZ. So in case of sandy soil, in case of clay soil, we have also discussed the formula. So before that, we have also talked about the dynamic formula and the static formula, which are used to determine the load carrying capacity of a single pile. So that is also important formula for the numerical. And the group action of piles, the load carrying capacity by the group of piles is also very, very important for the numerical points of view. And in the last lecture also we talked about the Feld's rule and the Converse Labarre formula. These formulas are also very, very important for the numerical point of view. So I will come to that point later on. We also talked about the group settlement of piles in sand and the clay, how we can calculate the settlement of a group settlement of a piles in sandy soil and the clay soil. So these things we have discussed in the last lectures. So today we shall talk about the under-reamed piles. We see the under-reamed piles. We shall see about the under-reamed piles. What do you mean by under-reamed piles? This is also one of the topics. This question is also asked time to time. Then we shall go for some numericals. So under-reamed piles. See, under-reamed piles are, you can see here, the 3 piles I have shown here. See here, the under-reams are also called as bulb. See, one under-ream means bulbs, we can say. Single by one thing, please. Here. The cursor is visible or not? Cursor? Yes, sir. Okay, ठीक. So see, one bulb is there, and you see in the second pile 2 bulbs are there. In third piles 3 bulbs are there. Bulbs means these bulbs are called as under-reamed. See, what is the benefit of the under-reams? Because the bearing capacity of soil will increase. See, you are going to increase the area of this bulb, area of this, the portion of the pile, the area of the portion of the pile you are going to increase. So in that case, definitely it will take more load of the structure. So that benefit is there. So here, under-reamed pile is one with an enlarged base or a bulb. The bulb is called under-reamed. As I told you in the beginning, if there is one under-ream, it is called a single under-reamed pile. And if there are more than 2 under-reams, it is called multi-under-reamed piles. More than 2. See, these can be called as multi-under-reamed piles, multi-under-reamed piles, or these 2 bulbs are there. So we can say 2 under-reamed piles or double under-reamed piles, like that we can say.
So underreamed piles are cast in situ piles. Cast in situ piles means what? How we have to, this is also cast in situ piles means what we have to do. I will tell you that we have to make a boreholes up to the required depth. Then we shall enter one instrument, one apparatus, which is called as under-reamer tool. So what we shall do, once we shall complete the hole, we shall make the hole. Then in the hole, we shall send the under-reaming tools. That tools will go up to the required depth, and it will start excavating the soil from the sides. Once you excavate the soils, and in the under-reamer itself, a bulk bucket is also there. So whatever the soil is going to be excavated, that soil is going to fall in the bucket, and then we shall take it out. So what is our target? We have to make a bulb here. If we are going to make a bulb, the area of this portion is going to increase, and it can take the more load of the structure. I will also talk you in this regard in the next topic. Next slides we can see. So the underreams are formed by a special underreaming equipment. The ratio of the bulb size to the pile shaft size. Bulb size means the size of the bulbs, the area of the bulbs, or the diameter of the bulbs also we can say. So the bulb size divided by the pile shaft size. Suppose the bulb diameter is 30 centimeter, and the shaft, this part is called as shaft, pile shaft. So the pile shaft is, we can say, suppose 10 centimeter, and this is 30 centimeter. So 30 by 10 will be equal to 3. So what it says that the ratio of the bulb size to the pile shaft size, this is called a pile shaft. Pile shaft इसको कहते हैं. Maybe 2 to 3, usually a value of 2.5 is used. इस रेशियो से ही हम लोग बल्ब का निर्माण करते हैं. So you can see here the bearing capacity of piles increases with the increase in base area. Base area means the area of the bulbs or the diameter of the bulbs if you are going to increase, or if you are going to increase the number of underreams, number of bulbs, if you are going to construct the number of bulbs inside the cast in the hole, in that case the bearing capacity will also increase. So these are the figures which we have to see here. So underreamed piles. Now we shall see the next parts. Yes, parts we shall see. Yes. See how we can find out the load carrying capacity of a single underreamed pile. See, this is the bulb, and this is the pile shaft. So IS code has also given the formula. So the load carrying capacity of a underreamed pile QU will be definitely equal to the load taken by this bulb. आप देखिए कि एरिया आपने जब पाइल्स का बढ़ा दिया, डायमीटर बढ़ा दिया, तो मिट्टी ज्यादा रुक सकेगा. इज इट क्लियर? यहाँ समझ में आ रहा है? एरो जो दिखाई पड़ रहा है, आप इस एरिया को, इस डायमीटर को बढ़ा दीजिए, तो आपका देखेंगे कि मिट्टी ज्यादा रुकावट लेगा ना. यहाँ मिट्टी तो ज्यादा रुकेगा, राइट. ऊपर से लोड आएगा तो मिट्टी ज्यादा रुक सकता है ये, क्योंकि आपने ये बल्ब के डायमीटर को बढ़ा दिया है. तो व्हाट इट सेज दैट हाउ मच लोड इज गोइंग टू बी टेकन बाय दिस बल्ब प्लस the load taken by the friction resistance along the periphery of the pile shaft. Friction resistance इसका कितना काम करता है हम लोग पढ़े भी हैं. इंड बियरिंग कितना लोड लेता है और फ्रिक्शन रेसिस्टेंस कितना लोड लेता है, दोनों मिल करके टोटल लोड स्ट्रक्चर का लेता है. सो वी कैन सी दिस फार्मूला. सो QPU is nothing but is the stress for the under-reamed piles, the stress which is working here, multiplied by the area of the bulbs, cross-section area of the bulbs. The stress into area is equal to nothing but the load taken by this bulb, we can say. Bulb is nothing but it is also called as under-reamed. So Fs is the friction resistance which is working along the periphery of the pile shaft, and surface area of the pile shaft, the surface area of the pile shaft. So this formula we can use to determine the load carrying capacity of a single under-reamed pile. The single under-reamed is there. So these are the points. Q is the load capacity of under-reamed piles. QPU is the load carried out by the end bearing, how much load it is going to be taken by this part, and how much load is going to be taken by the screen frictions. So further again we can this modified, and QPU the unit point bearing capacity of a bulb. That means this is the stress actually we can say, or area of section of the bulb pi by 4 du square, because
You can see here the diameter of this bulb is the DU. Diameter of the under-reamed, actually DU I have shown here so that you can see DU is the under-reamed, diameter of the under-reamed. तो इसका diameter अगर हमको मालूम है तो area of the bulbs निकाल सकते हैं pi/4 DU square. Unit skin friction, how much friction is going to work along the walls of the or along the periphery of the pile shaft, इसको pile shaft कहते हैं. Surface area of the embedded pile shaft, embedded means the depth below the ground level, that part is called as embedded का मतलब हुआ कि जमीन के नीचे जो पाइल का पार्ट है या पाइल शाफ्ट का जो पार्ट है उसको embedded हम लोग कहते हैं. embedded का मतलब मिट्टी के अंदर उसको कह सकते हैं. So this formula we can use to calculate the load carrying capacity of a under-reamed piles. There's many times they used to ask the question. Actually, numerical they do not ask, but they used to ask write a notes on the under-reamed piles, or how we can calculate the load carrying capacity of a single under-reamed piles and double under-reamed piles. So this is about your single under-reamed piles. Then we shall go for the double under-reamed piles. We shall see double under-reamed pile. So how we can calculate the load carrying capacity of a double under-reamed piles? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है. ठीक है, तो देखिए how we can calculate the load carrying capacity once you are going to install the double under-reamed. Double means two under-reamed piles, two under-reams. See, two bulbs are there. Under-ream is nothing but it's the bulb. Two bulbs, one bulb is here, another bulb is here. So how we can calculate the load carrying capacity of a double under-reamed piles? So what we are going to do, you can see here the load carried by the two double under-reamed piles, or this you can also say multi under-reams or double under-reams. In your examination, AKTU exam, normally they used to write double under-reamed also. So QUP is nothing but QPU into AB, the same things. ये इस पार्ट को हम नहीं कंसीडर करते हैं. अब याद रखिए, जो लास्ट बल्ब जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और वहां पर जो स्ट्रेस काम करता है नीचे से, ऊपर से लोड आ रहा था नीचे से स्ट्रेस काम करेगा. क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ बल्ब जितना बढ़ाएंगे तो हमारा बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा लोड हमारा ये पाइल ले सकता है. तो आप देखिए, so QPU into AB is the cross section area with the bulbs. So three components are there in this formula: the first component, second component, and third component. So first component is nothing but load carried out by this bottom under-reamed, bottom bulb we can say. And the second thing is given there, F-S into A-S. का मतलब ये हुआ कि ये बल्ब और इस बल्ब के बीच की जो दूरी है या ये बीच का जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ये मान लिया जाता है कि ये एक सिलेंडर के रूप में काम करता है पूरा एरिया. और ये दोनों मिल करके कितना लोड लेते हैं, इस पार्ट को कितना एरिया लोड कवर किया जाता है, उसको F' into A' S से डिनोट करते हैं. So F' means the friction which is working along from this center of this bulb to this center of this bulb, from top center of the bulbs to the last center of the bulb. दोनों के बीच जो फ्रिक्शन काम करता है along the cylinder, along the periphery of this bulb we can say, ये कितना यहाँ फ्रिक्शन रेसिस्टेंस काम करता है उसको हम लोग यहाँ कवर करते हैं. और एरिया यहाँ पर A' मीन्स द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. अब ये डॉटेड लाइन को कवर करते हुए हम लोग लेते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा. A' मीन्स the surface area of these cylinders, the dotted line, complete cylinder in between the two bulbs. And you can see how we can decide the depth in between the two bulbs or length in between the two bulbs. It varies from 1.25 du to 1.5 du. Du is nothing but diameter of the bulbs. So this is the first component. यहाँ कितना लोड ले रहा है और बीच में कितना लोड ले रहा है और पाइल शाफ्ट के थ्रू कितना लोड ले रहा है, F' into A'. दिस इज द पाइल शाफ्ट. तो ये तीनों मिल करके पूरे ऊपर से जो लोड आता है उस लोड को ये कवर करते हैं. सो दिस इज द फार्मूला विच वी हैव टू राइट इन आवर एग्जामिनेशन, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द load carrying capacity of a double under-reamed piles. So this is the things, single under-reamed and double under-reamed. So this much is sufficient for your examination point of view. Now we shall go to the next point. So now we shall go for the numericals. See, before that, I would like to show you the figures so that you will understand clearly that how we are installing the under-reamed piles in the field. You can see we are going to make a holes because already I have told you it is the cast in situ pile. Under-reamed pile is nothing but it is cast in situ pile.
साइड पर ही कास्टिंग करते हैं, साइड पर ही होल बना करके हम लोग, जैसे हम लोग ऑलरेडी कास्ट इन सिटू पाइल पढ़े भी हैं पहले. So what we have to do, we have to make a bore holes up to the required depth, and then under-reaming tool is there. You can see the under-reaming tools. This is the under-reaming tools. ये क्या होता है, पहले सिकुड़ा होता है. जब वो पूरा सिकुड़ा होता है, जब जैसे नीचे जाता है तो ऊपर से ही कंट्रोल होता है. इसको फैला सकते हैं हम लोग, और ये पूरा जो है फैल करके और मिट्टी जो है स्क्रैपिंग करता है. स्क्रैपिंग करने के बाद जो मिट्टी होल में जो स्क्रैपिंग करेगा वो बकेट में आकर के गिर जाता है और उसको ऊपर उठाकर निकाल लेते हैं. तो इस तरह से बल्ब हम तैयार करते हैं अंडर-रिम्ड, that is called as under-reamed also, or bulb also you can say. तो देखिए बल्ब यहाँ बनाया हुआ है. After that what we are going to do, we are going to put the reinforcement inside the hole, and once reinforcement, you are reinforcement casing, reinforcement हम already इसको surface पर ही बांध लेते हैं. After that we can put inside the hole, and then we shall go for concreting and then curing. Then our this under-reamed construction site will be, under-reamed piles construction site will be completed. तो ये प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एक तरह से हम लोग कर सकते हैं, how we can construct the under-reamed piles at the construction site. So now we shall see the numerical. I have given you 5 or some numericals study I have uploaded on the Google Classrooms. See, piles problem based on pile foundation. Dynamic formula पर हम लोग जैसे we have already studied engineering news formula. The one question has been also asked by the AKTU. So this numerical is there, and Healy's formula, based on the Healy formula, one numerical I have given you. Just for your ideas, I have given. I will talk you about the solution also. So this is a numerical which I have uploaded on the Google Classrooms. A static pile load formula. A static pile load formula for how we can solve the numericals. So that this is also given here. So 2 numericals are there that also we shall solve now. And the other numericals which are completely based on the Feld's rules and the Converse Labarre formula. You can see most of the times in the AKTU exam, they are asking question from the Feld's rules and the Converse Labarre formula. Though Feld's rule is not difficult, but if you are feeling any difficulties, in that case, directly you can use the Converse Labarre formula, because it is simple formula. Here, we have to have some ideas. I will tell you in the next slides. So you can see the numericals have been asked in the AKTU examination. Most all the numericals have been asked. So this is the 2015-16. This numerical has been asked. So this numerical has 2010-11. So I will tell you how the 3 types of numericals are normally there in the pile foundation. 3 types of numericals. So we shall solve all the numericals now. So am I audible? Yes, sir. Okay. So now we shall see the solution. Solution के लिए हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि we have already studied the dynamic formula, engineering news formula. This is the formula which you have already discussed, and for the in this formula you can see drop hammer formula is also there, and here it is written there for drop hammer what will be the values of C, and for single or double acting steam hammer what will be the values of C, 0.25. So likewise drop hammer formula, if in your numerical drop hammer is written, or the single acting or steam hammer is written, or the double acting steam hammer is written, so accordingly we have to use the formula. This formula we have to use for solving the numericals. Similarly, Healy's formula also we have discussed in the classes. So Healy's formula is also there. In the QF is equal to ultimate load taken by the pile eta H W H into eta B divided by S plus C by 2. So this formula also we have discussed in the previous lectures. So now just for your remembrance, I have given this formula. You can see that eta B, efficiency of a hammer blow, we can calculate by this formula when W is nothing but weight of the pile, weight of the hammer. W is the weight of the hammer, is greater than equal to EP. EP is the coefficient of restriction and P is the weight of the pile. अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर W से अगर ये कम आता है तो ये फार्मूला ईटा बी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और W की वैल्यू यदि अगर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करने से कम आता है, इन दैट केस वी शैल यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द ईटा बी. So you can see here P is the weight of the pile or helmet or pile cap also you can say. Coefficient of restitution, it is also a coefficient. It varies from 0 to 0.5 depending upon the type of
type of piles, whether the pile is made up of timber के लिए 0 होता है E की वैल्यू, और उस तरह से कंक्रीट के लिए वो न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है, E की वैल्यू दिया रहता है. So now we can see how we can solve the numericals. Now we shall discuss about this solution. You can see here a wooden pile is being driven with a drop hammer weighing 2000 kg and having a free fall of 1.0 meter. Free fall means the height of fall. H is given there. And W, the weight of the drop. You see here, drop hammer is written there. They have not written the single acting or double acting. So accordingly, we have to use the formula. So 2000 kg and the penetration in the last blow is 5 meter. That means S, हम लोग पढ़ा था कि S की वैल्यू जो है लास्ट जो ब्लो 5 ब्लोज पर कितना एवरेज जो पेनिट्रेशन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द पेनिट्रेशन set value, or we can say the 5 millimeter. Already it is given there in numerical. So determine the load carrying capacity of a pile according to engineering news formula. So we are going to find out the load carrying capacity of a single pile. See, engineering news formula or whatever the dynamic formula is there or a static formula is there. These formulas are used to determine the bearing capacity of a single pile, we can say. So आप देखिए QA is equal to ये formula हम इस्तेमाल करेंगे. और now allowable load, because this is allowable load, and suppose allowable load अगर पूछता है allowable load इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला अगर आ गया तो हम लोग को डायरेक्टली allowable load निकालना है. अदरवाइज other formula as are there, ultimate load, QF ultimate load we can calculate. So allowable load is nothing but ultimate load divided by factor of safety. उससे भी आगे निकालते हैं, हम लोग आगे देखेंगे उसको. So QA we can calculate, this is 11.11 ton. That means a single pile, a wooden pile, this is a wooden pile, can take the load about 11.11 ton, which we have calculated using the engineering use formula. So now we shall see one numerical from the Healy's formula. Healy's formula, what it says that, what is the numericals? A reinforced concrete pile weighing 3 ton. एक reinforced concrete pile है जिसका वजन 3 ton है, inclusive of helmet and dolly, is driven by a drop hammer weighing 4 ton. The weight of the drop hammer is 4 ton, having an effective fall of 0.8 meter. यहाँ आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. कर्सर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? कर्सर is visible? Yes. Yes. Yes, sir. So effective fall of height है, ईटा H into capital H is equal to दिया हुआ 0.8 meter. The average set per blow is 1 point. That means S, capital S is 1.4 cm. The total temporary elastic compression C is given there 1.8 centimeter. Assuming the coefficient of rescission E 0.25 and factor of safety 2, determine the ultimate bearing capacity. अब यहाँ देखिए ultimate bearing capacity पूछ रहा है and the allowable load. तो factor of safety दिया है तो अल्टीमेट हीले फार्मूला से हम लोग अल्टीमेट QF निकालते हैं. तो QF डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अलाउबल लोड हम लोग को निकल जाता है. या अलाउबल लोड इज इक्वल टू, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर निकालना हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाई अलाउबल लोड. This is the way to find out. You can see now what are the things it is given here. Weight of concrete pile P की वैल्यू दी हुई है 3 ton, जिसमें इंक्लूसिव हेलमेट एंड डॉल इज ऑल्सो देयर. Then weight of hammer 4 ton दिया हुआ है. And effective fall of hammer, कल जो मैं आप लोगों को जो बता रहा था, डिस्कस कर रहा था कि ये हीलेस फार्मूला में इफेक्टिव फॉल ऑफ हैमर लिखा रहता है. इसका मतलब ये है कि ईटा H इंटू H इज इक्वल टू 0.8 मीटर. सो इफेक्टिव फॉल ऑफ हैमर इज ऑल्सो इक्वल टू ईटा H इंटू H, इसको हम लोग करते हैं. और फाइनल सेट पर ब्लॉक कैपिटल S की वैल्यू दी हुई है 1.4 cm. एंड नाउ टोटल इलास्टिक कंप्रेशन C1, C2, C3. जब हम पाइल ड्राइविंग करते हैं तो उसका इलास्टिसिटी भी कम होता है. हर मटेरियल्स का अलग अलग अपनी इलास्टिसिटी होती है. कोफिशिएंट ऑफ रिस्यूशन ऑफ द मटेरियल्स अंडर इम्पैक्ट E इज आल्सो गिवन देयर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज आल्सो गिवन देयर 2 and C is nothing but the total elastic compression C1, C2, C3. So now we can see this further what we have to do. I have already told you in the formula that if W is greater than EP, W is the weight of the hammer. If W EP से अगर बड़ा है तब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे?
और W यदि EP से कम है तो कौन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? So you can see, calculate EP. EP you can multiply E into P, 0.75 is coming. That means it is coming less than W. So if it is coming less than W, yani W is greater than EP, in that case we have to use this formula, eta B is equal to this much. And after putting the values of E, P, all the values, the eta B we can calculate here. Or after that, we shall go for the Hilles formula. Hilles formula is QF is equal to eta H into H. अब देखिए फार्मूला में ईटा एच इंटू एच डब्लू, ईटा एच डब्लू एच ईटा बी ऐसे करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या किया गया हम लोगों ने, क्योंकि इफेक्टिव फॉल ऑफ हैमर दिया हुआ है, दैट मीन्स ईटा एच इंटू एच डायरेक्टली वी शैल टेक द वैल्यू इज गिवन देयर हियर. ईटा एच इज इक्वल टू एच, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वन 80 सेंटीमीटर ईटा एच इंटू एच. इसको इफेक्टिव फॉल ऑफ हैमर कहते हैं. तो इसको देखिए वैल्यू हमने रख दिया, और रखने के बाद we shall calculate ultimate load is equal to 83 ton. So allowable load is equal to ultimate load divided by factor of safety, yani this much. So load carrying capacity of a concrete pile using the Healy formula, we are going to get 41.5 ton. This will be the answer. So dynamic formula and static formula, how we can calculate the numericals. Now we shall go to the static pile load formula. Some formula I have given you for your just reference. So the how we can calculate how we can use the static pile load formula, or how we can find out the group capacity of a pile. So now this formula we have also discussed. Q is equal to CUB and CAB plus alpha CUS. अगर क्ले में अगर आप पाइल ड्राइव करते हैं, सिंगल पाइल ड्राइव करते हैं, तो क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, और इससे क्यू निकाल करके नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पाइल्स निकल जाएगा. इसके अलावा सपोज यू आर गोइंग टू यूज द ब्लॉक ऑफ ए पाइल्स, पूरा ब्लॉक ही एक आपको हमें दिखाया था कल, 3D डायमेंशन बताया था कि अगर पाइल्स ग्रुप में है तो उस स्थिति में भी ब्लॉक के रूप में अगर निकालना है तो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पाइल्स. तो ये फार्मूला हम लोग यूज भी करते हैं और ये फार्मूला भी यूज करते हैं. दोनों में जो कम आता है वैल्यू उसको आंसर हम लोग मान लेते हैं. ये भी फार्मूला कल हम लोग डिस्कस किया है कि हाउ efficiency of a pile group can be determined this using the formula that the load capacity of a group of pile divided by the sum of the individual piles. That means n is the number of piles and q is the load carried out by the single pile. तो टोटल मल्टीप्लाई करके और टोटल ब्लॉक से कितना लोड लिया जा रहा है और सिंगल पाइल को इसके कितना लोड लिया जा रहा है और कितने नंबर ऑफ सिंगल पाइल्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दी एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप ऑफ पाइल्स वी कैन फाइंड आउट. अब उसके बाद फेल्ड्स रूल आई हैव आल्सो डिस्कस विथ यू स्टडी. फेल्ड्स रूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट. सो व्हाट एक्चुअली फेल्ड्स सेड, ही हैज अज्यूम्ड दैट इन हिज रिसर्च, सपोज 3 पाइल्स वी हैव ड्रिवन, 3 पाइल हम लोगों ने ड्राइव किया है, इसके ऊपर पाइल कैप देते हैं, स्लैब बना देते हैं, उसके ऊपर हम पायर खड़ा करते हैं या स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं. सो व्हाट ही हैज सेड दैट दिस पाइल इज गोइंग टू शेयर its load 1/16th load to this pile and 1/16 load to this pile. So what will be the load at this point? 1 minus 1/16 plus 1 plus 1/16. That means 2/16. 1 minus 2/16 is equal to 14/16. And 14/16, so and the load carried out by this pile is Q. So 3 piles are there. So all the 3 piles are going to share each other. सब एक दूसरे को, ये भी शेयर करता है इधर, ये भी शेयर करता है, ये भी शेयर इधर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है. और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड डायगोनल, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, तीनों डायरेक्शंस में शेयर करते हैं. तो यहाँ देखिए 14/16 इंटू क्यू हो जाएगा, एक पाइल पर लोड होगा, क्योंकि ये शेयर कर दिया 2 जगह, ये भी 2 जगह शेयर कर दिया इधर, ये भी 2 जगह इधर भी शेयर कर दिया. तो इस तरह से हर पाइल के पास लोड जो है ये इतना हो गया, इतना बच गया. तो ये लोड 3 पाइल से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो देन अल्टीमेट लोड टेकन बाय दिस ग्रुप ऑफ पाइल्स हैविंग 3 पाइल्स विल बी इक्वल टू दिस मच. एंड सिमिलरली हियर वी आर गोइंग टू टेक द 1/16 in x direction. This fellow is going to share 1/16 in this direction, 1/16 in y direction, and 1/16 diagonal direction. These 3 things we have to always remember. So what is going to happen? Suppose 1 minus
1 by 16 plus 1 by 16 plus 1 by 16. So 1 minus 3 by 16 is equal to 13 by 16 into Q. That means one pile is going to take the load of 13 by 16 Q, and 4 piles are there, so we can multiply by 4. That means all the 4 piles are going to take the load of the structure, which will be equal to 4 into 13 by 16 to Q. So this idea was given by the Felds. So this we have to understand. And x direction, y direction, and the diagonal direction. Converse Labarre formula also we have discussed. This formula is very easy. So what I would like to suggest, compared to Feld's rule, you can directly use the Converse Labarre formula. This is very simple. Simply we have to put the value. I will solve some numerical, then you will easily understand. So M is the number of rows of piles in the group, number of piles rows in groups, and N is the number of piles in each group. Each group में each group यहाँ थोड़ा सा गलत, number of piles in each row होगा ये हम लोग यहाँ गलत लिखा है एक्चुअली. Number of piles in each row, और number of piles in M is the number of rows. कितने rows हैं और एक rows में कितना piles है वो N को डिनोट करता है. ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा. और थीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाइल डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ द पाइल. सो हम लोग इससे हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं कन्वर्स लाबारे से. Suppose you are going to find out the efficiency, then you can find out the QGU into eta G into NQ निकाल सकते हैं इससे. अब हम लोग चले न्यूमेरिकल्स पर. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you have to listen carefully, otherwise it will be difficult. See, the first numericals, 200 mm dia, 8 meter long piles are used as foundation for a column in a uniform deposit of medium clay. See, here the type of soil is given there. Clay is written there. And the UCS is also given there. The unconfined compressive strength is also given there. The spacing between the pile is 500 millimeter. And there are 9 piles in the groups arranged in a square pattern. Calculate the ultimate load capacity of a pile group, assuming adhesion factor alpha equal to 0.9. So how we can see UCS already we have discussed in the previous semester, that if UCS is given, then we can calculate the values of CU is equal to Q by 2, 50 kilonewton. CU निकल सकता है हम लोग का. तो अब देखिए यहाँ आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है. See, 9 piles are there. 9 piles are there. So suppose you are going to take the distance between the 2 piles. Center to center distance is suppose S, a small s. So what we can write, and the diameter of the pile is D, a small d. So हम लोग का spacing S plus S 2S. अगर आपसे पूछें कि इस पूरा ब्लॉक का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि S plus S 2S plus D by 2, this side D by 2, right? So चारों तरफ से अगर हमको डायमेंशन कवर करना है तो क्या होगा? 2S plus 2 into D by 2. D by 2 आधा इधर का ले लिया हमने और आधा इधर का डायमीटर ले लिया. So now we can see that ultimate load capacity of a single pile we can find out by this formula. So NC हम लोग पढ़े हैं कि 9 for circular और square piles के लिए यूज करते हैं. NC की वैल्यू, so D is the diameter of the pile, 0.2 meter. We have to put all the values in the same unit, and AB is the cross-section area of the single pile. So AB pi by 4 D square, 0.2 meter square. So this much value will be there, AB, and alpha is equal to 0.9. AS is nothing but surface area of the single pile. So pi DL, आप पढ़ो 2 pi R भी पढ़े और into L. तो टोटल ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई डी इज द पेरीमीटर एंड एल इज द लेंथ ऑफ द पाइल. तो आप इसे सरफेस एरिया इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं कि सरफेस एरिया पर फ्रिक्शन रेसिस्टेंस काम करता है. और आप लोग को थ्योरी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफ एस इज नथिंग बट अल्फा सी यू के बराबर होता है. तो एफ एस इंटू एस, दैट मीन्स द हाउ मच लोड इज गोइंग टू बी टेकन ड्यू टू द फ्रिक्शन रेसिस्टेंस विच इज वर्किंग अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द पाइल्स. तो सिंगल पाइल का हम लोग निकालते हैं पहले. ये हम लोग सिंगल पाइल का ऐसे निकाल लिया हमने, एस निकाल लिया और क्यू यू निकाल लिया फार्मूला से. कितना आ रहा है? इतना आ रहा है. देन व्हाट वी शैल डू, 9 पाइल्स आर देयर. सो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एक्शन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मच वैल्यू विल कम. सो
Now what we shall do? Now we shall go for the as a group of piles. तो ग्रुप ऑफ पाइल्स यानी ब्लॉक को हम लोग कंसीडर करेंगे। इसमें तो पहले सिंगल पाइल को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में हम लोग पूरा ब्लॉक को ही एक सिंगल पाइल के रूप में, इंडिविजुअल पाइल के रूप में मान लेते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? Width of the pile group will be 2 into a spacing plus 2 into d by 2. D is the diameter of the pile. So d is the diameter of the pile. So you can see d is here diameter of the pile is 0.2 meter. So 0.2 meter अगर diameter है और center to center spacing यहाँ s है ये, और यहाँ से s है तो 2s हो जाएगा, और ये हो जाएगा d। एक्चुअली यहाँ गलत फिगर, दिस इज कैपिटल D बिकॉज कैपिटल D हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ d by 2 हो जाएगा आधा के लिए, और यह आधा के लिए d by 2 हो जाएगा। So 2s plus 2 into d by 2. So you can see here d by 2 means 0.1 because 0.2 is already there, the diameter. So this will be the width of the group of the piles. Group width हम ऐसे निकाल लिया। तो ये स्क्वायर पैटर्न है, तो स्क्वायर पैटर्न है तो उसका हम कैसे निकालेंगे? अल्टीमेट लोड कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? This formula we have to use CUB and C into AB plus PB into L into CU. So P is the perimeter of the block, right? And L is the length, and C is the cohesion, which we have calculated 50, 100 by 2 करके निकाला था हम लोगों ने। So हम लोग निकाल लिया, QG इतना निकाला। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दोनों में से जो लोअर वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं। तो सिंगल पाइल के रूप में हमने 2163 निकाला है, और ब्लॉक के रूप में ये निकाला है, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी योर आंसर। So that means we can also say that the pile is going to take the load in the form of individual action, we can say. यानी ब्लॉक में है लेकिन वो सिंगल पाइल्स के रूप में लोड ले रहा है, और अगर फेल्यूर भी होगा तो सिंगल पाइल ही पहले एक एक पाइल करके फेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, यदि मान लीजिए ये अगर कम होता और ये ज़्यादा होता तो हम उसमें कहते कि ब्लॉक ही फेल कर जाएगा, डायरेक्ट ब्लॉक ही पूरा टूट जाएगा। तो यहाँ ये कम है, सो द कम की वैल्यू हम लोग यहाँ लेते हैं आंसर के रूप में। सिमिलरली यू कैन सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दिस इज फॉर द सिंगल पाइल्स एंड हियर क्ले डिपॉजिट इज देयर। क्ले है, किस तरह का सवाल है इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है न्यूमेरिकल के समय। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी है, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। व्हाट विल बी द सेफ लोड? सेफ लोड इज नथिंग बट इज द अलाउबल लोड। सो the ultimate load divided by factor of safety is the allowable load or safe load. तो यहाँ हमने निकाल लिया इसको और डिवाइड बाई 2.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया। नाउ यू सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी शैल गो फॉर द फेल्ड्स रूल एंड द कन्वर्स लाबारे फार्मूला। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। A group of 20 piles है। This question was asked in the AKTU exam 2011-12. A group of 20 piles, each having a diameter of 400 mm. Diameter भी जरूरत है, and length of the pile is 10 meter long, are arranged in a 4 rows at a spacing of 1 meter, center to center. The capacity of each pile is 380 kilonewton. एक पाइल 380 किलोन्यूटन लोड ले सकता है। Determine the group capacity of the piles. तो अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग को कौन सा, हेलो आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, ठीक। यस सर आ रही है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की क्या जरूरत है यहाँ, कि कोई सवाल का बात नहीं लिखा हुआ है कि पाइल्स जो है इन विच टाइप ऑफ सॉइल इट हैज बीन इंस्टॉल्ड और इट हैज बीन ड्रिवन। सो सी हम क्या सी ले ही नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट क्लियर हियर। यू कैन सी इन दिस न्यूमेरिकल सी इज नॉट गिवन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज देयर, whether we can take the C or whether we have to take phi is not clear in this numerical. So that's why directly we have to use this type of for this type of numerical we have to go for the either for the Feld's rule or the Converse Labarre formula. इस तरह का numerical आता है जहाँ सॉइल के प्रॉपर्टीज कुछ नहीं लिखा होगा। So now we can see Feld's rule हम आपको कैसे सोल्व करते हैं थोड़ा समझने की जरूरत है। जो मैं बताया था कि फेल्ड्स ने कहा था, ये अज्यूम किया था कि जो भी एक पाइल पर लोड पड़ता है वो एक्स एक्सिस पर उसके सामने जो भी उसके करीबी, जो भी उसके पड़ोसी पाइल्स हैं, एक्स डायरेक्शन में जो फाइल पड़ोसी है या वाई डायरेक्शन में है या डायगोनल डायरेक्शन में है, 1/16 उसके लोड का वो शेयर कर लेते हैं। इस तरह से सब एक दूसरे को शेयर करते हैं, सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। फेल्ड्स ने ये कहा था। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए
You can see the what idea he has put here. Hello. Yes, sir. Voice Yes. are. Yes. Yes, sir. So see the five. See 20 piles are there, or arrange in a what did he written there? 4 rows. 4 rows में इसको हम लोग को अरेंज करना है और टोटल पाइल्स 20 है. तो आप देखिए 4 rows 1 2 3 4 and in one row 5 piles are there. तो 5 into 4 20 piles हो गया हम लोग का. इसको सोल्व करने का टेक्निक कैसे है ये हम लोग को समझना है. How what we are going to do? We are going to write all the central piles. 4 central piles are there. 1 2 3 4. इसको हम लोग central piles कहते हैं. और ये फिर कॉर्नर पाइल, इस जो कोने पर जो पाइल्स हैं उसको कॉर्नर पाइल कहते हैं. और जो बीच में है दी 6 पाइल्स आर देयर इन द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर पाइल. और इसके बाहर वाले जो हैं दो दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कॉर्नर के बीच में बच गए हैं उसको पेरिफेरल पाइल हम लोग कह देते हैं, नाम रखते हैं इसका. सो कॉर्नर पाइल, सेंट्रल पाइल्स एंड पेरिफेरल पाइल. Then what we shall do here, you can see here number of such piles. जैसे 4 corner piles हैं, 6 central piles हैं, 10 peripheral piles हैं, टोटल मिलकर 20 piles हो गए. और 20 piles मिलकर के कितना लोड ले सकते हैं, कितना अल्टीमेट लोड हमको कैलकुलेट करना है फेल्ड्स रूल के आधार पर. So what we are going to do, what it says that number of adjacent pile is 3 here. Number of adjacent piles means you see here, you have to understand. So what are the adjacent piles? In x direction, one pile is here, another pile is diagonal direction here, another pile is here in diagonal direction. So 3 piles are there. आप देखिए इस कॉर्नर के जो पड़ोसी हैं 3 पाइल्स हैं. इस तरह से सभी कॉर्नर के 3 पाइल्स हैं. और सेंट्रल पाइल्स अगर आप देखिए, कोई एक सेंट्रल पाइल्स, मेरा ये कर्सर पर ध्यान रखिए आप लोग, अगर ये इसको सेंट्रल पाइल्स है, इसके करीबी कौन कौन है? इसके एक इधर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पेरिफेरल पाइल, सेंट्रल पाइल्स के 8 पड़ोसी हैं, 8 पाइल्स हैं. उस तरह से हम लोग को देखना, अगर पेरिफेरल पाइल्स पर जाएं तो 1 2 3 पाइल्स जो है पेरिफेरल पाइल्स इसके कहलाएंगे. यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी पेरिफेरल में 5 पाइल्स आ रहा है. कैसे? जैसे 1 इसका हो गया 1 2 और ये 3, ये डायगोनल भी होगा 3 4 एंड दिस डायगोनल 5. तो इस तरह से हम लोग को काउंट करके टोटल पाइल्स को पूरा करना हम लोग. जैसे ये तो 20 पाइल्स हो गया और इसके 3 ये ले रहे हैं, फिर इसके पड़ोसी 8 हैं, इसके पड़ोसी 5 हैं. तो हम लोग ने पढ़ा है कि हर पाइल्स जो है 1/16 जो है पड़ोसी को दे देता है. तो 3 पड़ोसी हैं तो 3/16 माइनस होगा, और 1 - 3 16 मार एक पाइल 380 लोड लेता है. तो हर पाइल्स का लोड कितना होगा, एक एक पाइल कितने लोड लेंगे ये यहाँ निकल जाएगा. फिर उस तरह से यहाँ पर देखिए 8 पाइल्स पेरिफेरल्स हैं, 1/16 शेयर कर रहा है. तो 1/16 शेयर कर रहा है तो कैसे हम लोग, एक पाइल पर 380 टन पड़ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको. अभी इस तरह से 5 पाइल शेयर कर रहा है तो कैसे निकालेंगे. अब ये एक पाइल्स पर इतना लोड रियली शेयर करने के बाद बच रहा है. और ये कितने पाइल्स हैं टोटल? 6 पाइल्स हैं, यहाँ 4 पाइल्स हैं, यहाँ 10 पाइल्स हैं. तो उस लोड को मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल ऐड कर दीजिए, 4987 किलो न्यूटन आएगा. लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आंसर जो होगा फेल्ड्स रूल्स और कन्वर्स लबारे फार्मूला में डिफरेंस आएगा, बिकॉज दिस आर ऑल्सो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दे आर गोइंग टू गिव. तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है. So 4987 kilonewton, the group of piles can take the loads. Similarly, you can see here, you can also use the converse Labarre formula. Number of rows 4 है, number of piles in each row 5 है, और diameter of the pile is given there 0.4, यानी 400 मिलीमीटर है, और स्पेसिंग ऑफ पॉइल 1 सेंटर टू सेंटर है. तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगी, दिस इज द 90 डिग्री. तो इफिशियंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पाइल्स यू कैन फाइंड आउट. So 62% or 0.62 we have to use in the calculation. So eta g, we know eta g, चूंकि हमको न्यूमेरिकल पूछ रहा है ये अल्टीमेट लोड निकालने के लिए, तो eta g हम फार्मूला से निकालते हैं कन्वर्स लबारे से. तो qg इज इक्वल टू ng इंटू nq, ये फार्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे. आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंस है, उसका 49 समथिंग आ रहा है, 47 समथिंग आ रहा है. नथिंग टू वरी, विच एवर फार्मूला यू आर गोइंग टू यूज इन द एग्जामिनेशन, both will be considered as correct methods.
सो नाउ वी कैन सी दिस, सभी न्यूमेरिकल्स इसी टाइप से ही आपके सोल्व होंगे. 2 minutes time I will take maximum. So see, a group of 16 piles each having a diameter of 350 mm and 10 mm long are arranged in 4 rows, and a spacing is also given there. The capacity of each pile is also given there. Determine the group capacity of it. 15-16 में आया हुआ है आपका. अब ये फेल्ड्स रूल से भी आप बना सकते हैं. इसमें भी वैसे ही आप फिगर बना लीजिए पाइल्स का, और कॉर्नर पाइल्स डिसाइड कर लीजिए, और फिर पेरिफेरल पाइल्स, इसको बाहर वाले को पेरिफेरल, माने बाहर, पेरिफेरल मीन्स बाहर का. How many peripheral piles are there? How many central? 4 central piles are there. 2 to 4 to 6 to 8. 8 peripheral piles are there. 4 corners piles are there. So all like that you have to write, and then you have to find out how much one pile is going to take the load, and multiply by the total number of piles. Then you will get the total ultimate load. आप इसे भी निकाल सकते हैं. अगर सिमिलरली कन्वर्स लबारे का भी हमने यूज किया है. सो दी एन एम की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आप निकाल करके, और क्यू जी की वैल्यू कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप्स से नंबर ऑफ पाइल्स मल्टीप्लाई बाय इफिशिएंसी इनटू लोड टेकन बाय द वन पाइल, इससे निकाल दीजिए आप. दूसरा आप देखिए, ये पाइल जो देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका सॉइल का दिया हुआ है, बिकॉज सॉफ्ट क्ले इज रिटन देयर. सो वी हैव टू गो फॉर द स्टैटिक फार्मूला दैट वी हैव यूज फॉर द क्ले सॉइल फॉर द ग्रुप ऑफ पाइल्स. तो हम लोग जस्ट ऊपर सोल्व किया था, उसी आइडिया को यहाँ लगाया गया है. और आप देखिए व्हाट वी हैव डन हियर. UCS is given there, so CU you can find out, and diameter of pile is also given there. So QV, the same formula, CV and CAB plus this one alpha into CVS हम लोग निकाल सकते हैं. एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सिंगल पाइल, और सिंगल पाइल का लोड कितना लगेगा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और लोड, अल्टीमेट लोड निकालने के बाद सेफ लोड ये पूछ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे. बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग दैट for the single pile one, actually for ARCC pile of ARCC pile single. It is not this numerical is not based on the group of pile. This is related to the single pile. So that's why single pile हम लोग का ultimate load निकाल करके factor of safety से divide करना है. Then we can find out either that you can say allowable load or the safe load. So this is about this numerical. Similarly, you can see this numerical they have asked in 2014-15. And this can be solved by the same, the Feld's rules and Converse Labarre formula. But you see here, they are asking determine the group efficiency of pile. अब जैसे ग्रुप इफिशियंसी पूछ रहा है, तो कन्वर्स लबारे फार्मूला से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग ग्रुप इफिशियंसी निकाल सकते हैं. तो ये फायदा हम लोग का है कि डायरेक्ट कन्वर्स लबारे फार्मूला ग्रुप इफिशियंसी के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग उस फार्मूला को यूज करके और कैलकुलेट कर लें. सो these are the numericals. Similarly, you can see this numerical is also there. But here the type of soil is given there. That means it is clay soil, because Q value is also given there. So हम लोग जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल बताया था उस तरह से ही ये भी सॉल्व होगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है. सो आई थिंक आई विल आल्सो अपलोड दिस सॉल्यूशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द लास्ट यू कैन आल्सो आस्क. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स, एंड यू कैन गो थ्रू इट. Then we shall discuss. If you have any doubt, we shall discuss again.